Hi everybody, welcome back to my channel. So this session is our continued session of our backup part of checkpoint firewall. So on first session, I have done the theory part, like how many types of backup in checkpoint firewall. Like we have snapshot backup, we have system backup, and we have generally safe configuration, safe config. So in this session, I'm going to show you live with the help of lab. Okay. So this session is for our system backup, like how we can take the system backup and how we can revert it. Okay. So for that, we need to log into your firewall, whatever it is management or whatever it is gateway. Okay. So let me log in. Okay. Then we need to come here like maintenance, and in maintenance there is option like system backup. Okay. And this is the default path of the backup, guys. This is the default path. Var log, checkpoint backup, then backups. So this question is generally asked in the CCSA global exam also. For example, you are trying to give a global certification exam for CCSA, that is checkpoint certified security administrator. So ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि what is the path for the system backup. Okay. So we need to click on the backup, and then what I will do, I will do some changes and I will try to revert it. So it will, it will be give more confidence like how it is useful in the production. So click on the backup. We can backup it, we can import it, we can export it. You can logs, view logs also, view last backups. So for example, let me first take the backup. So there are some backup type like this appliance, ACP server, FTP server, TFTP server. So like if you want to take the backup of on the local device, so this option is going to be used, this appliance. In production, sometimes like happen like we have our separate ACP server or TFTP server. So if you're going to click ACP server, then we need to give your ACP server IP address, then username, then password, and then upload path. Okay. And this is for TFTP server. So you need to give your TFTP server IP address, and this is for FTP server. For that, we need to give your FTP server IP address, then username and password and upload path. Okay, कि आप किस पाथ में इस FTP सर्वर के किस पाथ में अपलोड करना चाहते हो. Same for SCP, same for TFTP. SCP is more secure, so it is recommended if you are doing anything like in the production. If you want to store your system backup on some remote location, some your server, it is recommended to use SCP server, and we need to keep your SCP server IP address, then username, then password, then upload path. मतलब इस सर्वर के किस पाथ में आप जाकर अपलोड करना चाहते हो. Okay, so we don't have any SCP, FTP, TFTP server, so I will go with local, and then we need to click backup. So at the moment we don't have much configuration, so it will be very quick, and it is going to store locally, and this is the path. So we'll try to see that backup with the help of CLI. We'll go in this path and we'll try to see that also. Okay. Let me log in till CLI. Okay, it is already there. Let me go on the expert. Okay, fine. Let me refresh it. It should be quick because we don't have much configuration at the moment in our live environment. Okay. Let me override the log, then go on the system backup. See, so backup size is only 184.667 MB. So because at the moment we don't have much configuration, that is the reason. But in production, basically it will be big in size. A snapshot is huge in size, we can say. So this is the system backup. It is not going to contain operating system related things. Okay. So if we click here, we can export it. We can view logs.
जहाँ पर आपको दिखाएगा कि भाई लोकल लोकेशन क्या है, लोकली हुआ है, एंड स्टेटस सक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एसीपी सर्वर पर कर रहा हूँ, हमारे पास अभी एसीपी सर्वर नहीं है, तो हमें एरर आएगा। तो हमें व्यू लॉग्स में दिखेगा। तो इट इज वेरी वेरी गुड थिंग्स फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस इन प्रोडक्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट पुटिंग एनी आईपी 192.168.1.2. Okay, this is not my SCP server. Okay, and I'm putting username admin, password I'm putting admin 123, upload path I'm putting like for example, I'm just putting anything like uh, for example d slash name local underscore backup, or it is not taking. Okay, we need to mention like this. For example, I'm just putting plus d slash I'm putting any name, for example local. Okay, and try to click on the backup. सी, अनेबल टू वैलिडेट रिमोट सर्वर आइडेंटिटी, फेल टू कनेक्ट टू रिमोट होस्ट, क्योंकि हमारे पास टीसीपी सर्वर है ही नहीं, तो आएगा ही, राइट। सो अगर उसके बाद में अगर आप आकर यहाँ पर लॉग्स व्यू लॉग्स देखोगे तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, उसका रीजन मिलेगा। लेट मी ओवरराइड द लॉग, एंड देन इफ यू गो ऑन द मेंटेनेंस सिस्टम बैकअप, आप जाते हो व्यू लॉग्स में जाते हो। सो व्यू लास्ट बैकअप, ये देखो हमने अभी एसीपी से ट्राई किया बट उसमें कोई इन नहीं हुआ बैकअप। सो लास्ट वाज लोकल बैकअप एंड इट वाज सक्सेसफुल। ओके, so it should show like more detail also, but not sure why it not showing, but हमें वहां पर डिटेल ये बाय not sure why it is blocking over ads. Let me go again. So this is our the success backup, but it should show generally failed backup also. So view logs is very very important and it's play a vital role. If you want to do anything troubleshooting related to backup parts, okay. And this is our, what we have tried for with help of ACP also, but it is not successful. So it is showing NA, and success one is showing like it is local backup, and it is showing the timing like हमने कब लिया था, और this is the default path of the backup slash var log checkpoint backup and backups and backup इस नाम से है. So we'll see that. Okay. So we have already taken the backup. Let me just export it so that we can do some modification and then try to revert it. So export it. Okay. It will ask like where you want to export. So हमने बोला कि ये काम करो तुम डाउनलोड में ही हमें एक्सपोर्ट कर दो. Okay. And if you come through CLI, if you go on the CD slash var slash log, like this is the path. We can copy also. If you want to copy it, just copy it. Go on the checkpoint gateway in export mode, and if you type hit ls, we need to go on the first CD and then try to hit like that, and then ls. See, so whatever backup is taken, it is taken by this name. Okay, so system backup is taken by this name. Okay, so this is a default path. So we can find your system backup with the help of this path, and this is the name. Okay, so we have already taken the backup, we have already export it, and let me do some configuration like changes, and we'll try to revert it. So for example, if you go on the host and DNS, I'm just trying to put our secondary DNS anything like 4.2.2.2.2.2. Okay, and third DNS I'm putting like 1.1.1.1. Okay, and I'm putting domain name like test.local. ओके, और हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया. ओके, so for example same thing we did in the production, and later you realize like whatever changes I have done, it is wrong and it is creating issue in the production.
this is the lab environment, so I'm doing anything, that is fine. But in production, we should be like make sure like whatever changes you are doing, it should be verify and do under the change and company change process. Okay, so मान लीजिए हमने चेंजेस कर दिया एंड आफ्टर दैट सम इशू क्रिएटेड एनीवन कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया रिपोर्टिंग इशू. सो यू वांट लाइक कि हमें प्रीवियस जो हमारा सेटअप था, प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन था, हमें उसी में चाहिए. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन द बैकअप. सो दिस इज द रिकमेंडेड टू टेक बैकअप व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी चेंजेस ऑन द प्रोडक्शन डिवाइस, सो दैट अगर कुछ इवेंट ऑफ फेलियर होता है वी कैन रिवर्ट इट, राइट. सो हम चाहते हैं कि जो हमारे पहले कॉन्फ़िगरेशन था वैसा हो जाए. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन बैकअप बिफोर डूइंग आवर चेंजेस. सो नाउ गो ऑन द मेंटेनेंस सिस्टम बैकअप. अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड हम क्या करें, रीस्टोर करेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी एक्सपोर्टेड इट, ओके, एंड ये वाला डिलीट हो गया. फॉर एग्जांपल वी हैव डिलीटेड इट, ओके, एंड देन वी नीड टू इंपोर्ट इट बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है. सो वेयर इट इज डाउनलोड, ओपन, इंपोर्ट. So it will be quick because it is not much in the size. मान लो आपके केस में बैकअप डिलीट हो चुका है फायर, बिकॉज वी जनरली डोंट कीप बैकअप फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि स्पेस के चलते हम ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रखते हैं. तो इफ यू अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर, प्लीज ओके टू रिकनेक्ट. ओके, लेट मी थिंक टेस्ट लॉग आउट. ये हमारा बैकअप हमने पहले एक्सपोर्ट किया था, फिर हमने इंपोर्ट कर दिया है. पता चला कि भाई इशू आगे, हमें जो भी चेंजेस किया था हमें रिवर्ट करना है. यू डोंट वांट टू कीप द न्यू चेंजेस क्योंकि इशू क्रिएट हो रहा है. सो क्लिक इट एंड रीस्टार्ट. यू क्लिक ऑन द रीस्टोर, परफॉर्म लोकल रीस्टोर. इट इज गोइंग टू परफॉर्म लोकल रीस्टोर. सो ये क्या होगा कि इसके बाद में जैसे ये रिस्टोरेशन हो जाएगा, मे बी इट विल गो फॉर द रिबूट. एंड उसके बाद में हम चेंजेस जो देखें, जो भी हमने चेंजेस किया था वहां से वो हट जाएंगे और प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे, जो जैसा पहले सेटअप था वैसा आ जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्ले एंड डू थिंग्स इन द प्रोडक्शन ऑल्सो. आई कांट से प्ले, बट we can do similar things in the production also. Okay, so I'm going to just pause for a little bit. Once it is ready, then I will start it. Okay, so our restoration has been done, backup restoration has been done, and once we do the backup restoration, your device will going to be reboot. So please make sure while doing the production, do under the non-business hour, do under your company change process. Okay, जैसे हमने रिस्टोर किया, आवर डिवाइसेज वेंट फॉर रिबूट, फिर हम उसको ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए. सो नाउ इट इज अगेन एक्सेसिबल. और उसके बाद हम भी देखेंगे कि जो भी हमने चेंजेस किया था वो हमारा चला गया, और जो पहले जो भी सेटअप था, पहले जो भी चेंजेस थे एज इट इज वैसा आ गया. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने क्या चेंज किया था, होस्ट एंड डीएनएस में चेंज किया था. सी, तो हमने चेंज किया था, यहाँ पर डोमेन नेम दिया था टेस्ट और लोकल, यहाँ पर हमने सेकेंडरी डीएनएस भी दिया था, थर्ड डीएनएस भी दिया था. ओके, सो हमने क्या किया, बैकअप जो भी हमने लिया था सिस्टम बैकअप, वी हैव डन रिस्टोरेशन. ओके, सो जो भी हमने चेंजेस किया था वो यहाँ से चला गया, और हमने चेंज करने से पहले जो बैकअप लिया था, तो चेंज करने से पहले हमने बैकअप लिया था उसी को हमने रिस्टोर किया, रिवर्ट किया. सो उस समय जो भी कॉन्फ़िगरेशन था हमारे फायरवॉल पर वो एज इट इज आ गया. ओके, एंड जो भी हमने न्यू चेंजेस किया वो चला गया, मतलब इट्स गॉन. सो आफ्टर रिवर्ट, जब हमें फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि हमने जब रिवर्ट कर दिया, चेंजेस के बाद इशू आ रहे हैं, एंड इन कंपनी दे स्टार्टेड ब्लेमिंग यू लाइक इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर चेंज, एंड दे रिक्वेस्टेड टू रिवर्ट योर चेंजेस. सो आपने जब रिवर्ट किया, देन वी नीड टू टेल लाइक वी हैव डन द रिस्टोर ऑफ आवर backup, like whatever you have taken before our changes. Now we can check the connectivity. Okay,
One last thing I want to show before closing this session. If you go on the system backup, we can also schedule your backup. Some kind, in sometimes in the company generally schedule the backup. For example, you can schedule for this in this appliance, or we can schedule for daily basis, weekly, monthly. We can schedule locally backup, or we can schedule for HCP server, FTP server, TFTP server. It's up to you, and we can do as per your company process. Like आप backup कैसे लेते हो? Okay. So generally nowadays, some company, like in my current company, we are trying to start taking backup with the help of automation Python script. So I will show that part also once it will be checkpoint series will be completed. Once I will start my automation things, I'll show you like how we can take the backup through a Python script. But that is not for the local backup and snapshot backup. Okay, that will for some commands. For example, there are 10-20 commands you want to take backup, we can take with the help of a script. Okay, so we can schedule your backup, and then like in on your recipe server, FTP server, TFTP server, or locally, or on a daily basis, weekly, monthly, it's up to you. Okay, so that's it about the system backup, and how we can take the system backup, how we can restore it. So I've shown you live, guys, in the lab. If you like this session, if you like my efforts, please share, like, and subscribe as much as possible. Thank you very much, everybody.